You all are warmly welcomed. Today we are going to discuss diction and its types. It is an important topic if you are going to prepare any kind of competitive exam and to appear for the lecturership of specifically English literature or English subject. So what is diction? Diction is the choice of words used by the writer. हर राइटर डिफरेंट डिक्शन यूज़ करेगा, डिफरेंट वर्ड चॉइस यूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू हिज स्टाइल, according to the tone he wants to create, according to the atmosphere, according to the setting. So it is the choice of specific words and phrases depending on the outcome they are trying to achieve. So diction can create a certain tone that supports the purpose of the writer. It can support the setting because it is used according to the setting. If there is formal setting, you have to use formal language. If there is informal setting, you have to use informal language, and it also establishes a narrative voice or tone and a point of view of the writer, and it brings the characters to life. So there are different types of diction. First type is formal diction. Formal diction is the use of sophisticated language, and it doesn't use any slang or colloquial language, and it sticks to the grammatical rules, and it uses complex and syntax structure of the sentences. एक भारी भरकम सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा. दिस एलिवेटेड टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ ऑफन फाउंड इन प्रोफेशनल टेक्स्ट. इसको प्रोफेशनल टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में एंड लीगल पेपर्स में. For example, according to Dr. Smith, there is a 30% chance that the experiment's result will not be accurate. अब इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हुई, आपको नज़र आ रहा है कि वर्ड्स को थोड़ा केयरफुली चूज़ किया गया है. Second is informal diction. Informal diction is more conversational. Conversational क्या है? मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बात जिस लहजे में करते हैं, that is informal diction, and it is usually used in narrative literature, and it is the language that is used in communication in real life. And जब आप रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो राइटर डिपिक्ट्स मोर रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड राइटर हैज़ मोर फ्रीडम टू express the things realistically, and most short stories and novels use informal diction. For example, Hank told us that test wouldn't give us the right results. अब इसने जिस तरह हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं उसी तरह बताया गया कि हैक ने मुझे बताया कि जनाब टेस्ट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. So pedantic diction is the type of diction that is highly detailed or academic, and words are chosen specifically to convey only one meaning. It is sometimes used in literature when the character speaks in a highly educated manner. जब आपने educated manner में बात करनी हो और आपको एक ही मीनिंग कन्वे करना है और एकेडमिक राइटिंग लिखनी है, देन यू विल यूज़ पेडेंटिक डिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हैंक्स रिजल्ट्स डू नॉट कंसिडर द रेमिफिकेशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इवन अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड. अब इसके अंदर जो सिंपल सी बात उसने करनी थी कि हैंक जो है वो तो एक सिंपल सी बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इतनी सी बात भी समझ नहीं सका, तो उसको ज़रा भारी भरकम ज़रा डिटेल्ड में उन्होंने लिख दिया कि रेमिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इवन अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड. Next is colloquial diction. Colloquial uses colloquial words or expressions that are informal and generally represent a certain region or time. Colloquial diction जो है that is related to region. किसी भी region की जो language variation है, that is colloquialism. So and you all are examples of colloquial expressions. आप जैसे हम उर्दू की अगर बात करें तो हम कर रही हो को कह देते हैं कि क्या कर रही हो, तो दैट इज़ द सेम केस विद colloquial diction. Like they just minimize the word, they just shorten the word, they just abbreviate the words. So colloquial expressions born in rural areas of United States. अब ये यूनाइटेड स्टेट्स में इज़ नोट को एंड बोला जाता है, आर नोट को एंड बोला जाता है. इसी तरह
colloquial expressions जो है they are specific to a specific color, or they add realism to the writing because they are related to some specific people. For example, you all are gonna wanna see the wicked test Hank is doing. Wanna, gonna, these are regional variations of the language. Next is slang diction. Slang diction is related to a specific culture or group, और एक कल्चर और ग्रुप में उस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, दूसरे में सिंपल मीनिंग होगा, बट दैट कल्चर हैज़ एसोसिएटेड दैट वर्ड विद अ स्पेसिफिक मीनिंग. लाइक हम एग्रावेटेड को स्पेसिफिक उसको शॉर्ट करके एग्रो कह देते हैं. हिप का मीनिंग ट्रेंडी हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में, किसी और डिक्शन में कोई और हो सकता है. थ्रो शेड का मीनिंग है टू इंसल्ट समवन. इसी तरह ग्रूवी का मीनिंग है समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग एक्सीलेंट. सो हैंगस्टर्स इज़ फार आउट बट द रिजल्ट्स एंड गोइंग टू बी ग्रूवी. अब ग्रूवी का मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ और होगा, बट स्लैंग डिक्शन में इट्स लाइक अगर एक्सीलेंट भी कहना होता तो कह सकते थे, बट ग्रूवी कह दिया. So abstract diction, abstract as the abstract word says, it is something that cannot be touched, felt, or heard. It doesn't relate to the use of your five senses. It is something intangible, like an idea or an emotion. So basically these are related to emotions. For example, Hank's love for science doesn't impair his spiritual beliefs. Love is something abstract, you can't touch it. This spiritual beliefs is something abstract, you can't touch it. So this is example of abstract diction. Next is concrete diction. Concrete diction is the type of diction that is related to something that is tangible. So you can touch the things, like I can eat apple. So apple is something you can touch and it has physical form. So Hank typed the results into the computer. So typing is a process that is done with your hands, and when you are using your hand, you are using one of your senses, and it is concrete. Computer is has physical existence, so it is also example of concrete diction. Next is poetic diction. It's one of my most favorite types of diction. It is driven by the lyrical words. There is lyricity, there is rhythm, there is harmony, there is musicality. The word choice creates a harmonious sound, and it gives beauty to the use of language, and it is used along with the descriptive language. Sometimes it creates a beat or rhythm. For example, here we see reason and Newton. They are quite two things. For so the swallow and the sparrow sings. They're so, swallow, sparrow. तीनों के sounds S के आ रहे हैं. So it is creating a rhythm, and it is creating beauty. Reason says miracle, Newton says doubt. So this was about poetic diction, and I hope all types of diction are clear. If you have any question, you can ask me in the comment box. Thanks.